Welcome to our PURNACHANDRA Higher Secondary School, BARIPADA. I am your Ellen sir. तो हमर जो क्लास 12 रो केमिस्ट्री रो सॉलिड स्टेट हमर पढ़ा हेतिला लास्ट जो क्लास हेतिला सेठी हमें पढ़िथिले सॉलिड स्टेट कोन आ दार टाइप्स ऑफ सॉलिड आ पढ़िथिले हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड रो वेरियस टाइप्स. सो हमें आज ही पढ़िबा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. तो क्रिस्टल लैटिस कोन फर्स्ट हमें बुझिबा जे व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल. क्रिस्टल मींस specially arrangement of constituent particles, that is regular arrangement or disciplined arrangement. That means crystal lattice माने होची जे हमरो regularly arrangement of the constituent particles with 3 dimensional space. जदि 3 dimensional space रे हमरो regularly arrangement हेतु constituent particle गुडा सेगुडा को हमें कोन करबा crystal lattice. हमें नै जिबा सपोज गोटे हमें एडी फिगर कोले तो एडी जो रहेगा that is called crystal lattice. That means so many cubic shape are arranged with regular manner. That is the crystal point or it is the constituent particles, the point of constituent particles. So it is called space lattice or crystal lattice. Then we have to go that unit cell. Unit cell. What do you mean by unit cell? Unit cell is the smallest part of the crystal lattice. Crystal lattice ro smallest part ta ko ame kon कहबा unit cell. ताले what is the difference between crystal lattice and unit cell? The difference between cubic lattice cubic crystal and unit cell is crystal lattice रे कोन होची ना so many unit cells are arranged together to form crystal lattice, but crystal lattice रो गोटे small part होची unit cell. जेमति कि गोटे घर तयारी कला बेलकु आमे डिफरेंट माने इटा बहुत गुडा नै कि तयारी करछे. सो गोटे इटा को आमे कोन कहबा unit cell and so many bricks और इटा जो गुडा रहउची ताको अरेंजमेंट करि के आमे बडा घरटे करूचे बा कांथोटा करूचे सेटा को आमे कोन कहबा crystal lattice. ठीक अछि. नेक्स्ट आमे जिबा जे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. सो तागर टिके हम बुझिबा जे यूनिट सेल रो आमे जो टाइप्स कहउचे अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर. According to the parameter गोटे हमें यूनिट सेल सपोज हमें से स्पेस लैटिस रु गोटे स्मॉल पार्ट हमें नौचे काढिनेला परे कोन हैला ना इठी हमें यूनिट सेल गोटे पाइ गले. से यूनिट सेल रे कोन कोन रहउची ना सेल पैरामीटर को आउची. सेल पैरामीटर रहउची देखो एटा सपोज मु नेली y axis, that is x axis and that is z axis. So these are the axes. Suppose A, then B, and it is C. So these are the edge length. Number 1, the cell parameter will be edge length. Edge length, that is A, B, and C. Again, the interfacial angle of this side. That means second I am nova. Suppose A ro face angle होची अल्फा, B रो फेस एंगल होची बीटा एंड C रो फेस एंगल होची गामा. दैट मींस अल्फा और इंटरफेसियल एंगल these are alpha, beta and gamma. So according to these 6 parameters, that is 3 axis and 3 angle, according to these 6 parameters the unit cell are classified or categorized into 7 types. According to the 6 parameters, it is divided into 7 types. These are cubic crystal, tetragonal, orthorhombic, trigonal, that is rhombohedral, hexagonal, monoclinic and triclinic. So in cubic crystal the 6 parameters are A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. So
you have draw this diagram, that means A equal to B equal to C and alpha, beta, gamma all are equal with 90 degree. So पिला माने तुम माने एगुडा निजे ड्रॉ करि परिबो A B C तीनटा समान हेतु एक्सिस आ अल्फा बीटा गामा तीनटा 90 डिग्री हेतु. दैट मींस एटी मु गुटे शो करे देछि जे एटी को देखो ए एक्सिस टा आ ए एक्सिस टा दैट इज A गोटे क्यूब रो तीनटा साथ तो हमरो एज लेंथ समान थाय ना. दैट मींस एटा तुमरो जदी बेस होउची एटा तुमरो हाइट होउची एटा होउची तारो साइड गोटे. दैट मींस A B and C all are equal. A equal to B equal to C. Like that tetragonal A not A equal to B not equal to C, then alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. तो एगुडा सब लर्न कर दबो केमती ट्रिक्स रहउची तार मने रखिबार ट्रिक्स केमती देखो. फास्ट हमें कोन करले क्यूबिक टेट्रागोनल आ ऑर्थोरोम्बिक एगुडा तीनटा देखो. फास्ट इंटरफेशियल एंगल गुडा तुमरो सब कोन अछि इक्वल अछि आ 90 डिग्री अछि. बट ए जो एज लेंथ गुडा कोन अछि देखो फास्ट रे तीनटा सारा समान अछि. नेक्स्ट तुमरो B नॉट इक्वल टू C एटी केवल डिफरेंस होछि. देन तीनटा सारा तुमरो डिफरेंस होछि. दैट मींस CTO एमती मन रखिबो CTO ताले एठी एंगल गुडा तीनटा समान अछि विथ 90 डिग्री. बट तुमरो एज लेंथ गुडा डिफरेंस होछि. तुमरो फर्स्ट रे तीनटा सारा समान, सेकंड रे तीनटा समान, गोटे समान नहे आ थर्ड रे तीनटा सारा समान. नेक्स्ट ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल परे मैक्सिमम टाइम हमर एग्जाम में रोम्बोहेड्रल पड़े. ट्राइगोनल तक मन रखिबो खाली जे रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक से भला तुम माने एडा को मने रखि दबो. ठीक अछि. तो नेक्स्ट हमें पढिबा जे ए जो तुमरो टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल रे रहउची 7 टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल जे तार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडा सब केटी सब अरेंजमेंट हेछि. Then the arrangement of the constituent particles according to this or according to the arrangement of constituent particles the crystal system further classified into four types. That means देखो एटी जो हमर 7 टाइप्स रो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रहउला पुनी से कहउची जे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अनुसार को जगह रे तुमरो पार्टिकल्स गुडा सब अरेंजमेंट है सेही हिसाब रे तुमरो आउ 4 टाइप्स रो रहउची. ता माने गोटे तुमरो क्रिस्टल सिस्टम 4 टाइप्स रो क्रिस्टल सिस्टम दबो. तो एठी हमरो 7 टाइप्स रो क्रिस्टल सिस्टम अछि. तो हमें टोटल जदी हिसाब कर दबा ताले 7 into 4 that equal to 28. But experimentally we can found only 14 types of cubic crystal system. Only 14 types. That is called Bravais lattice. ठीक अछि. तो आमे बर्तमान से 14 टाइप्स रो क्यूबिक क्रिस्टल रे देखिबा को टाइप रो अरेंजमेंट हेतिबो. ठीक अछि. तो ए अनुसार हम जो 4 टाइप्स रो क्यूबिक क्रिस्टल रहउची बा 4 टाइप्स रो यूनिट सेल रहउची, that will be one is known as primitive unit cell, or it is also called simple unit cell. Next, second, body centered unit cell. Third, face centered unit cell. And fourth रे रहउची तुमरो end centered unit cell. तो देखिया वर्तमान हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडा रहउची को टाइप रो अरेंजमेंट हेतो. प्रिमिटिव यूनिट सेल रे कोठी पार्टिकल थिबो, बॉडी सेंटर रे कोठी थिबो, एंड फेस सेंटर रे कोठी थिबो, देन एंड सेंटर रे कोठी पार्टिकल्स गुडा थिबो. ओके.
फर्स्ट आमे जिबा प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल रे कोन होची ना all the constituent particles are present at only corner of the cube, that is suppose it is a three-dimensional space and all the particles, constituent particles, that will be spherical shape, particle shape को बोला spherical shape, जो spherical shape रहउची तार उठे पॉइंट रहउची constituent particles रो जो पॉइंट टा एटा को कहा जाय कोन क्रिस्टल पॉइंट, एटा को कहा जाय क्रिस्टल पॉइंट बा लैटिस साइड बा लैटिस पॉइंट कहा जाय। ठीक अछि, तो हमर ए जो constituent particles उडा केट थिबो सब उडा तमरो कॉर्नर रे प्रेजेंट थिबो, ताको हमें कोन कहबा सिंपल और primitive unit cell। So we can write the primitive unit cell, or in primitive unit cell all the constituent particles are present at the corner only, that is called primitive unit cell, and these corner particles are contribute towards the crystal point or crystal, that will be 1/8 part of one atom। Suppose हमारा एटम स्फेरिकल बदवर पार्टिकल गुडा जो रहउची सेगुडा कोन स्फेरिकल शेप रे कोन होची ना जदी हमें याकू 8 भाग रे डिवाइड कर देबा, 8 पार्ट्स रे डिवाइड कर देले ताले ओनली 1 पार्ट्स एठी तमरा कंट्रीब्यूट्स करूची। ठीक अछि, ताले 1 पार्ट्स कंट्रीब्यूट्स करूची, दैट मींस 8टा कोन रे 8टा पार्टिकल रहउची, ताले टोटल नंबर ऑफ एटम हमें काढी परिबा केमति ना 1/8 into 8, so that will be the total number of atoms present in primitive unit cell, that equal to 1. So in primitive unit cell or simple unit cell the total number of atoms per unit cell will be 1. Now we can discuss the how many cubic crystal shows primitive unit cell. So all the 7 crystal system or all the 7 types of crystal are shown primitive unit cell. So now we can write 7 types of cubic crystal or 7 types of crystal shown primitive unit cell or primitive unit cell। ठीक अछि, तो आमे देखिले एडी 7 टाइप्स रो यूनिट सेल बा क्यूबिक क्रिस्टल गुडा हमरो प्रिमिटिव यूनिट सेल परिबो, तमने क्यूबिक भी हे परिबो, टेट्रागोनल भी, ऑर्थोरोम्बिक भी, ट्राइगोनल भी, हेक्सागोनल भी, मोनोक्लिनिक भी एंड ट्राइक्लिनिक भी, सब गुडा हमरो प्रिमिटिव बा सिंपल यूनिट सेल हे परिबो। नेक्स्ट आमे जिबा हमरो बॉडी सेंटर, सेकंड रे आमे जिबा बॉडी सेंटर, body centered unit cell। so body centered unit cell रे कोन होची देखो, it is the 3D arrangement of cubic crystal and the constituent particles are present at the corner, at the 8 corner of the cubic crystal as well as at the center of the body, whole body रे तमरो गोटे रहउची जेटा कि तमरो टोटल क्यूबिक क्रिस्टल को ऑक्युपाई करूची, एंड वी कैन से द कॉर्नर पार्टिकल्स आर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द क्यूबिक क्रिस्टल, दैट इक्वल टू 1/8, एंड द बॉडी सेंटर और द बॉडी पार्टिकल्स contributes 1, whole atoms or whole particles will be contribute towards the cubic crystal। so the total number of particles atoms present at the body centered unit cell, that equal to 1/8 into 8 corner plus of total body रे हमर गोटे पार्टिकल अछि, that equal to 2, that means we can say that the total number of atoms is equal to 2 in case of body centered unit cell। clear। नेक्स्ट हम देखिबा जे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल हमरो ए जो 7 क्रिस्टल सिस्टम रे को क्रिस्टल सिस्टम टा को हमरो फॉलो कर जिबा देखौची। एटी रहउची तुमरो CTO मन रखिबो बॉडी एटी कोन होला ना हम जानते प्रिमिटिव बा सिंपल रे कोन होची 7टा सारा शो करथला, बट एटी ट्रिक्स टा मन रखिबो जे बॉडी रे तुमरो CTO, दैट इज क्यूबिक टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। तो फर्स्ट
फास्ट हमें पाइथिले केते 7 एठी हमें पाइले 3 तो 10 हे गला आउ 4 टाइप्स रो क्यूबिक क्रिस्टल शो करिवो जेटे कि तमरो बॉडी सेंटर गला। नेक्स्ट हमें जिबा फेस सेंटर। नेक्स्ट थर्ड रे फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कोन होची ना जो तुमरो क्रिस्टल सिस्टम रहउची दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रहउची। The cubic crystal system रे particles are present at the corner, corner रे त रहइबो particle सब corner गुडा रहइला 8टा corner रे particle 8टा रहइला। next आउ केठी रहइला ना each face of the or each center of the face, that means प्रत्येक face रो center रे भी particle रहइला। at right side को that is top and that is back side, that is front side, that is bottom and that is left side। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें केमती कैलकुलेट करबा देखो ए जो कॉर्नर रो पार्टिकल हमें जानछे केते 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम, बट इन केस ऑफ फेस देयर विल बी हाफ, दैट इज हाफ कंट्रीब्यूशन। दैट मींस हमें देखले सपोज टोटल एटा होची गोटे स्फेरिकल एटम, सो यारो हाफ तुमरो कंट्रीब्यूट करछि भीतर को आउ हाफ कोन होची बाहर को होची। ताले ए जो हमें लेखिबा जे यारो केते पार्ट गोटे एटम जदि टोटल लाउची ताले तारो हाफ पार्ट तुमरो कंट्रीब्यूट करछि टुवर्ड्स द crystal system। okay, now the total number of atoms in face centered unit cell equal to 1/8 into केते ना 8टा कॉर्नर अछि प्लस 1/2 into केते फेस 6 फेस, so that equal to 1 plus ये 3 that equal to 4। so total number of atoms केतेला 4 in case of face centered unit cell। so गोटे यूनिट सेल रे हमर 4टा एटम रहउची के फेस सेंटर्ड यूनिट सेल रे। नेक्स्ट हम जिबा जे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमर को क्रिस्टल सिस्टम रे देखा जाउची। ठीक अछि, फेस सेंटर रे की देखा जाउची ताले ना एट रहउची तुमरो क्यूबिक रहउची। ताले हम देखिबा फेस रे क्यूबिक रहउची आउ ऑर्थोरोम्बिक रहउची, क्यूबिक एंड ऑर्थोरोम्बिक। ताले हम देखले जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बा सिंपल यूनिट सेल रे टोटल 7 टाइप्स रो क्यूबिक क्रिस्टल शो करथुला। तापर हमर होला बॉडी सेंटर रे केवल सीटीओ क्यूबिक टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। नाउ इन केस ऑफ फेस सेंटर देयर विल बी क्यूबिक एंड ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट हम जिबा तो एठी हमर दीटा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम शो करला, हम एठी ऐड कर देला पुनी 2 ताले ए हे गेला 12। नेक्स्ट आउ दीटा रहला तमरो जोडे तमरो एंड सेंटर रे शो करे। नेक्स्ट हम पढिबा फोर्थ रे और फोर्थ टाइप रे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। so in case of end centered unit cell the constituent particles are arranged at the corner as well as the center of two opposite face, that will be particles present at the corner and two opposite face either top or bottom, that will be taken। so it will be 1/8 we know and the face will be 1/2। so total number of atoms equal to 1/8 into 8 plus 1/2 into 2, that equal to 2। so total number of atom equal to 2 in case of end centered unit cell। ठीक अछि, तो ए जो end centered unit cell रे हमर कोटा देखा जाय ना हमें मन के मोनोक्लिनिक आउ ऑर्थोरोम्बिक, that means end centered रे मन के मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक। तो एटी गोटे क्वेश्चन तो माने कमेंट सेक्शन रे दबो जे गोटे एमती तमरो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम अछि जोटा कि चारटा सारा शो करथुओ, फेस सेंटर भी, बॉडी सेंटर भी, सिंपल भी और एंड सेंटर भी। ठीक अछि, एटा कमेंट सेक्शन रे तो माने निजे लेखि कि सेटा को बॉक्स रे ताको पकेयो। ठीक अछि, नेक्स्ट हम जिबा ताले एठी हम देखिले दीटा तमरो रहला कोन क्रिस्टल सिस्टम, तो एठी हमने आउ 2 ऐड करले। नेक्स्ट
आमे जानले कि जे तुम्हारो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रे केतला रहउची ना 14 टाइप्स रो क्यूबिक क्रिस्टल तुम्हारो प्रैक्टिकली हमें पाउचे एक्सपेरिमेंटली हमें पाउचे सो इट इज कॉल्ड 14 टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ब्राविस लैटिस मैक्सिमम टाइम एग्जाम रे पढ़े तुम्हारो व्हाट डू यू मीन बाय ब्राविस लैटिस ओके तो एतिकी हमर रहला जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बा तुम्हारो क्रिस्टल लैटिस आउ यूनिट सेल जोड़ा रहला नेक्स्ट हमें पढ़िबा जे ए जो तुम्हारो पार्टिकल पार्टिकल भीतर डिस्टेंस ता केते ठीक अछि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करिबा देखो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हमें काढिया पूर्वरु जे 3 टाइप्स रो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रहउची तमरो 3D स्पेस रे सेगडा को मु फास्ट डिस्कस करे दउची जे तमरो फास्ट रहला टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रे नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से सेम जिंस यूनिट सेल रे जोडा हम पढितले प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड बट एठी हमें कोन कोन पढिबा से प्रिमिटिव और सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड सो 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रे हम फर्स्ट देखले ना इट इज 2 टाइप्स व्हाट होची मोर प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल आ गुटा हम देखले सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल तो ये जो सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का कोनी तुमरो 3 टाइप्स है जी जेडे कि तुमरो ऑलरेडी कुहा सर जी जोडा तुमरो फर्स्ट रहउची बॉडी सेंटर दैट इज बीसीसी मु लिख देली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल देन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एसीसी सो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल रे तुमर कोन रहउची ना सपोज एटा रहला गोटे सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल सेठी कोन होची ना पार्टिकल्स गुडा सब केडी अछि कॉर्नर रे अछि पार्टिकल्स गुडा सब कॉर्नर रे अछि तो पार्टिकल जदी कॉर्नर रे प्रेजेंस अछि ताले ताको भीतर डिस्टेंस ता सपोज एटा गोटे हमर कोन क्यूब रो सब एज लेंथ गुडा कोन इक्वल सपोज दैट विल बी a and that will be also a it is also a so the total distance between two intermolecule or interparticle that equal to a so distance हमें जदी हम कहबा जे interparticle distance d equal to a so it will be a but ए जो पार्टिकल्स गुडा रहउची एगुडा कोन ना एगुडा सब गोटे गोटे स्फेरिकल शेप तो हमें एटा की कोन करिया ना गोटे स्फीयर बनै देबा तो एटा गोटे स्फीयर गेला सब पार्टिकल्स गुडा एमती शेप रहउची तो एठी हमें कोन करले ना ए जो स्फेरिकल ता रहउची बा स्फीयर ता रहउची तार एटा कोन एटा होची गोटे रेडियस ये भी गोटे रेडियस सो हमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और रेडियस भी बाहर करबा रेडियस ऑफ द एटम सो रेडियस ऑफ द एटम रेडियस of the atom that is r equal to in accordance with a r equal to देखो एटा टोटल टा a थिला वर्तमान एटा r तले r equal to हमें लिखि परिबा a by 2 r equal to a by 2 so that is the radius of the atom and it is the interparticle distance between the two particle तो primitive unit cell ताले हमें distance interparticle distance पाइले a रेडियस ऑफ द एटम हम पाइले कोन ना a by 2 याकु नै के बहुत बड़ा तुमरो प्रॉब्लम भी पड़े देई दिबो तुमरो कोन ना इंटर पार्टिकल डिस्टेंस देई दिबो रेडियस मागी दिबो ठीक अछि तो एटा सिंपल यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल वाला नेक्स्ट हम पढ़िया बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल तार इंटर पार्टिकल डिस्टेंस केते आ रेडियस ऑफ द एटम केते तो नेक्स्ट हम सेकंड पे जीवा बॉडी सेंटर
body centered cubic crystal system, cubic crystal that is BCC ठीक अछि। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल ले कोन होची ना जो तुमरो पार्टिकल्स के डिकेट रहउची कॉर्नर रे पार्टिकल रहउची एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो पार्टिकल्स के रहला सब कॉर्नर गुडा रहला आउ टोटल बॉडी रे गोटे पार्टिकल रहला। तो आमे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मींस कोन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। सो जदि तुमरा एटा हमर जेतु गोटे कोन रहउछ ना क्यूब रहउछ एटार एंगल तुमर एज लेंथ केते होछि a होछि ताले सब गुडा एटा भी a ये भी a ये भी a। नाउ देखो a टू एतिकी डिस्टेंस एतिकी सपोज मु याको गोटे नाम दे देली a याको दे देली सपोज b ताले a b रो डिस्टेंस जहा a आउ ए मिडिल रे जो रहउछ एटमटा ताका को डिस्टेंस नियाती कोन हो a b रो डिस्टेंस ता बेसी हो। तो इंटर पार्टिकल दैट मींस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वर्तमान के जो एई पार्टिकल रो एई पार्टिकल को स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जो ठीक अछि। तो आमे वर्तमान ए टू एतिकी डिस्टेंस जहा हो ए बी रो एतिकी डिस्टेंस भी से होबो आ सब कॉर्नर गुडा रो डिस्टेंस एतिकी सेम होबो। तो गोटे यदि आमे ए रो एतिकी डिस्टेंस आमे कैलकुलेट करबा ताले आमे कहि परिबा दैट विल बी द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स दैट इज। सो हमें ए डिस्टेंस को पाया पाई ए डिस्टेंस को पाया पाई या को हमें फर्स्ट ऐड कर देले देन एडी हमें जॉइन कर देले। नेक्स्ट देखो जेहेतु a और b a b इक्वल टू a सो दैट इज a राइट एंगल ट्रायंगल। इन केस ऑफ क्यूब व्हाट क्यूब रे एटा कोन होची व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल होची। तो a right angle triangle according to Pythagoras theorem that is suppose C and it is D, it is O. So AC equal to we can write AC equal to AB square plus of BC square ro whole root over that equal to or AC we can found AC. So it will be derived from Pythagoras theorem and we can find AC. Suppose AB equal to kete a that equal to a square plus of a square rho root over that equal to root 2a. So AC हमें कते पाई गले root 2a हमें लिखि देले एटा को root 2a। तो वर्तमान देखो ए जो AD और C ट्रायंगल ADC रे एटा हमर को ट्रायंगल रहला ABC ट्रायंगल ABC रे नै कि। तो वर्तमान हमें ट्रायंगल A C and D इन ट्रायंगल A C D रे कोन होछि देखो AC and CD गोटे तमरा CD टा बेस होछि ये होछि तमरा हाइट एंड AD इज द हाइपोटेनस। सो AD रो स्क्वायर और AD इक्वल टू AC रो स्क्वायर प्लस ऑफ CD रो स्क्वायर रो रूट ओवर जेतो हमरा ए एंगल ला केतो ए एंगल ता 90 डिग्री हबो। देखो जदि हमें ऊपरे एंती रखि देले गोटे गारो आनि देले ताले ता तळ को ठीक जोटा आछि सेटा तमर केतो 90 डिग्री हबो। सो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल लॉ और पाइथागोरस थ्योरम AD इज द हाइपोटेनस। सो AD इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर रो रूट ओवर दैट मींस AC हमें जान जे केते √2a रो स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर प्लस CD केते a स्क्वायर रो रूट ओवर दैट इक्वल टू √3a। ताले हमें AD पाई गेले √3a। सपोज AD हमें केते पाई गेले √3a बट वी हैव टू फाइंड दैट the distance between A and O that is the internuclear distance or sorry interparticle distance that is so AO equal to AD by 4 that equal to √3a by 4 that is the interparticle distance. So we can write D equal to √3a by 4 that is the distance of two particles. And what will be the radius of atom? Radius suppose AD गोटे atom अछि या पाई मु एटा स्फेरिकल नेगली AD गोटे atom अछि एठी नेगली ये तमरा
एमती पार्टिकल रहइला ठीक अछि। तो वर्तमान एटी रेडियस केटा हला ये गोटे रेडियस ये गोटे रेडियस ये गोटे रेडियस ये गोटे रेडियस। तो मु एटी AD = 4r लिखि परिबी AD = 4r AD = 4r and AD = मु पाइछि केते √3a so √3a = 4r that equal to r = √3a/4 √3a sorry AD जो हम लिखि दिली AD AO = AD/2 होगा AD/2 that equal to AD/2 √3a/2 and distance will be √3a/2. now AD = 4r so radius of atom equal to √3a/4 ठीक अछि। नेक्स्ट आउ लास्ट गुटे रहला फेस सेंटर्ड यूनिट सेल रे हमें डिस्टेंस और रेडियस को कैलकुलेट करिबा। नेक्स्ट हमें जीवा फेस सेंटर्ड थर्ड रे रहला तमरो फेस सेंटर्ड cubic crystal that is FCC. So in case of face centered cubic crystal the all atoms are present at the corner as well as the center of each face so if the distance between this point and this point is a and it also a so we can join from this to this then that point to that point will be the smallest distance between two particles suppose a b and c so we can write the distance d equal to ab/2 and radius देखो ab ताले हम केमति बा ये जदी a हैला ये a हैला ताले ये कोन हो ये राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये केते हो √2a ऑलरेडी मु कहै छै ता पूर्व ताले ये √2a हैला जदी ये √2a हैला ताले a b होची √2a तो एटी डिस्टेंस ला कोन होची ताको बाइसेक्ट करूची दैट मींस मु सपोज AO नै गली ताले d = मु नै गली AO सपोज AB that is √2a/2 ताले डिस्टेंस of two particles or distance between two particles will be √2a/2 and radius equal to now 18 है कि मु गोटे स्फीयर बनेली याकु नै गोटे स्फीयर बनेली याकु नै गोटे स्फीयर बनेली ताले रेडियस केता हला सेही 4 रेडियस हला ताले हम कहि बेरिया रेडियस इक्वल टू केते होची ab/4 ab केते हम पाइछे √2a that is by 4 so radius and distance will be found that is √2a/2 will be the distance between two particles and radius of atom will be √2a/4 so एटा को हमने शॉर्टकट से मन रखिया पई गोटे टेबुलेशन करी की निजे बुझिया पई तुम गोटे टेबल कर दबो जो टेबल रे की तुम्हारो डिस्टेंस रखि दबो रेडियस रखि दबो आउ केतेटा लेखे एटम रहउची पर यूनिट सेल पर तुम क्यूबिक क्रिस्टल रे केतेटा लेखे एटम रहउची सेगुडा को गोटे छोटे टेबल करी की तुमने मन रखि परिबो ठीक अछि। थैंक यू आज पे एतिकी तो गोटे जिंस होची जे जेते बेले भी तुम माने पढुचो पूरा कंप्लीटली ताको भल से देखि की पढो जदी किछि प्रॉब्लम होची तुम माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो किबा तुम माने डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर दिया आछि ताको फोन करी की निजे बुझी परिबो ठीक अछि। थैंक यू एंड समस्त घरे रहो जेहेतु हमरा वर्तमान कोरोना पई क्लास होई पारुनी घरे रही की पाठ पढो सब बेले तुम सहित पूर्णचंद्र कॉलेज अछि। थैंक यू।